Friends, on behalf of My Retired Life Foundation, we extend a very hearty welcome to all of you for this much anticipated program, Sab Ki Suno. It's a very unique initiative because it gives an opportunity to all of us to share our thoughts, views, ideas on a particular topic. So, to anchor today's Sab Ki Suno program, we have with us our beloved colleague Kalpana Acharya, Madam. My request, Madam, to please take it over. Madam, floor is open. नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच। तो आज ग्रिगोरियन कैलेंडर मई 24 है और हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि शनिवार। तो आज की शाम का अच्छे मौसम भी है और सब लोग एकदम खुशी खुशी से इधर आए हुए। और पहला प्रोग्राम हम शुरुआत करते हैं कृष्ण कुमार जी का। एंड कृष्ण कुमार जी हम सबको पता है काफी वर्सेटाइल पर्सन है, मल्टी टैलेंटेड। और इनका टॉपिक एनी गेसेस कि मैं एक बताती हूँ, आप गेस करना कि वो कंट्री से है जहां वर्ल्ड वॉर में बॉम्ब हुए थे। उस कंट्री के बारे में, कौन सा कंट्री? जापान। यस, थैंक यू कृष्ण कुमार जी, फ्लोर इज योर्स, वेलकम। Thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah. Today, I'm going to talk on a topic called MUDA, a Japanese concept. The Taj Group of Hotels had invited Mr. Masai Imai from Japan to hold a workshop for its staff. The staff were very skeptical. The hotel is doing excellent business. This person from Japan has no exposure to hotel industry. What exactly he is going to teach? But everybody gathered as planned for the workshop in the conference hall sharp at 9 a.m. Mr. Masai was introduced to them, a not so impressive personality, nor the English all that good, spoke as if he was first formulating each sentence in Japanese and then translating it to rather clumsy English. Good morning. Let's start work. I am told this is a workshop, but I see neither work nor shop. So let's proceed where work is happening. Let's start with the first room on the first floor. Mr. Masai, followed by the senior management, the participants, the video camera crew, trooped out of the conference room and proceeded to the destination. That happened to be the laundry room of the hotel. Mr. Masai entered the room and stood at the window. Beautiful view, he said. The staff knew it. They need not invite a Japanese consultant to tell them this. A room with such a beautiful view is being wasted as a laundry room. Shift the laundry to the basement and convert this into a guest room. Aha! Now nobody had ever thought about that. The manager said, yes, it can be done. Then let's do it, Mr. Masai said. Yes, sir. I'll make a note of this and we will include it in the report on the workshop that will be prepared, said the manager. Excuse me, but there is nothing to note down in this. Let's just do it just now, said Mr. Masai. Just now, manager? Yes, decide on a room in the ground floor stroke basement and shift the stuff out of the room right away. It should take a couple of hours, right? Asked Mr. Masai. Yes, manager said. Let's come back here just before lunch. By then, all this stuff will have got shifted out and the room must be ready with the carpets, furniture, etc. And from today, you can start earning the few thousand that you charge your customers for a night. Okay, sir. The manager had no option. The next destination was the pantry. The group entered. At the entrance were two huge sinks full of plates to be washed. Mr. Masai removed his jacket and started washing the plates. Sir, please, what are you doing? The manager didn't know what to say and what to do. Why I am washing the plates? Mr. Masai, but sir, there is staff here to do that, said the manager. Mr. Masai continued washing. I think sink is for washing plates. There are stands here to keep the plates, and the plates should go to the stands.
All the officials wondered, did they require a consultant to tell them this? After finishing the job, Mr. Masai asked, how many plates do you have? Plenty, so that there should never be any shortage, answered the manager. Mr. Masai said, we have a word in Japanese called muda. Muda means delay. Muda means unnecessary spending. One lesson to be learned in this workshop is to avoid both. If you have plenty of plates, there will be delay in cleaning them up. The first step to correct the situation is to remove all the excess plates. Yes, we will say this in the report, said the manager. No wasting our time in writing the report is again an instead of muda. We must pack the extra plates in a box right away and send these to whichever other section of Taj requires these. Throughout the workshop, now we will find out where all we find this muda hidden. And then at every spot and session, the staff eagerly awaited to find muda and learn how to avoid it. On the last day, Mr. Masai told a story. A Japanese and an American, both fond of hunting, met in a jungle. They entered deep jungle and suddenly realized that they had run out of bullets. Just then, they heard a lion roaring. Both started running, but the Japanese took a short break to put on the sports shoes. The American said, what are you doing? We must first get to the car. The Japanese responded, no, I only have to ensure that I remain ahead of you. All the participants engrossed in listening to the story realized suddenly that the lion would stop after getting his victim. The lesson is competition in today's world is so fierce that it is important to stay ahead of the other, even by just a couple of steps. And you have such a huge and naturally well-endowed country. If you remember to curtail your production expenditure and give the best quality always, you will be miles ahead as compared to so many other countries in the world, concluded Mr. Masai. It is never late to learn. Let us all take the muda out of our lives. And let me tell you, this also happens to our own homes or places where we stay, where there are a lot of things which we accumulate over a period of time and which can be discarded without any delay. Thank you so much for patiently hearing my view. Thank you. Thank you, Krishna Kumar sir. Beautiful. Because you gave this topic in the morning, motivated me to read a little more about this. So I understand it was first started after World War II by the Toyota Productions and by Mr. Taichi Ohda. And it has got, I think, an acronym called as Teak Wood, where transportation and every area, very beautiful story. And हमारे इसमें बोलना तो सुबह शीघ्रम, so everything has to be completed as early and there should be no delay. Very, very beautiful. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. I call upon our next participant who rocked the show in the recent get-together, Ramani Ji sir. He is such a motivation and inspiration for the, zest in him and the versatility which both of them carry. Floor is yours, Ramani sir. He's going to talk today about karuna, kindness and gratitude. Welcome, Ramani sir. Thank you. Thank you, Kalpana madam. Good evening, everyone. Thank you, Dr. Sangupta sir, for giving me once again the platform to share my thoughts. Today, I am going to talk on kindness and sympathy. It's not going to be an abstract talk. I will give you some real life anecdotes to narrate how these two traits become very important to keep the human society together. Kindness and sympathy are essential qualities and contribute to a more compassionate and understanding society. Under the broad umbrella of kindness comes compassion, gratitude, sympathy, empathy, etc. In this talk, I will narrate a few anecdotes to bring out these traits. The first one is an anecdote from the United States.
A poor young boy by name Howard Kelly used to sell toys and distribute newspapers to earn some money. He set apart a share of his earnings to meet his schooling expenditure. With the result, he went hungry on most of the days. The neighborhood knew the boy very well, and occasionally they used to give him food as and when he wanted. One day, he knocked at a door with the intention of asking for some food. A young woman opened the door, and Kelly felt shy to ask for food from that woman. So instead of asking for food, he said, I need a glass of water. Now, the lady immediately understood this boy is really hungry, but he is not asking for food. So she went inside and brought a glass of milk. Now, the boy had the milk. He thanked the lady and he said, I have no money to pay for the milk. The lady answered that she will not accept money for helping someone who was hungry and in need of food. Kelly thanked her and left. Many years later, the young boy, Howard Kelly, had become Dr. Howard Kelly, a specialist doctor in John Hopkins Hospital. One day, he was called in to attend a woman patient who was seriously sick and was admitted to the hospital. Dr. Kelly saw the patient, and from the medical records, he found out her address and realized that this woman was the one who gave him a glass of milk many, many years ago when he was really hungry. He took special care of the patient, and the patient recovered. On the day of her discharge, the lady asked for the bill, and with trepidation that the bill is going to be a huge amount and she has to ask for installments to settle the bill. When finally she received the bill for a huge amount, and even as she was looking at the bill top to bottom, she found a small note at the bottom of the bill which said, this bill has been paid with a glass of milk many years ago. And Howard Kelly. This is an example of gratitude for receiving help. Here is a second anecdote. In fact, in Sanskrit, this gratitude is called kritagya, and the compassion may be called daya. Here is a second anecdote. There was a studious young boy in Chennai who had completed class 12 and got a call for joining the BTech course in distant Birla Institute of Technology in Ranchi. But the boy did not have the money to travel to Ranchi, and so he decided to forego his admission. The boy's maths teacher, Mr. Saini, came to know of his predicament, and the teacher gave the boy rupees 500 to travel to BIT Besra and take the course. This is kindness. The boy successfully completed the course, and several years later had become the CEO of a bank. All along, he remembered the timely help rendered by his teacher, and he wanted to express his gratitude. He was in search of his teacher. The CEO of the bank met his old teacher after several years, located him at Agra, who had settled there after his retirement. The boy met him, thanked him, remembered the gratitude, and transferred 1 lakh shares of his personal shares from the bank to the teacher. The value of the shares at that time, market value, although the face value was 10 rupees, market value was 29.80 rupees. So nearly 30 lakhs was the gratitude he paid for a 500 rupees help which this teacher had rendered. Now, this is exactly Kritagna. Now, sympathy is slightly different trait. We will have an example of sympathy, a practical real life example. In Kerala, a policewoman by name Aparna Lavakumar, happened to visit a hospital as part of her duties where she found 3 young girls in distress. Their mother had died of some illness, and the hospital would release the body only when the bill of rupees 60,000 was cleared. Aparna didn't know what to do, but the 3 girls were in real distress. Aparna opened up her handbag,
pulled out her own 4 gold bangles and handed them over to the girls to get the money required. This is sympathy. A few months later, the same policewoman Aparna was meeting a few cancer patients. When she found a young boy of 6 years complaining to her that his peers, the other boys, were ragging him because he was bald, being a patient of chemotherapy. Aparna consoled him and went straight to a salon and got her long hair tonsured. She donated the locks of hair to a non-profit making organization which was making wigs and requested that organization to gift a wig to the young boy who was feeling bad because of the ragging. Now, we all get a peace of mind by putting our two hands together in prayer. We all know that. But we will get the same peace of mind when we extend one hand to help someone in need. Thank you. Thank you, Ramniji. Such lovely anecdotes. And I'm sure because this is a senior citizen group, everybody's experiences has taken them through the journeys. And there is a lot of realization to go in this path of kindness, compassion, empathy, gratitude, and care. Thank you so much. So beautifully rendered. Thank you. Thank you. अगला पार्टिसिपेंट है none other than drama specialist along with Samata ma'am's guidance and in team always. Any guesses? Okay, Sandhya ji. Sandhya Garaj ji, welcome you. And today she is going to talk. उनकी topic है Shambhaji Jayanti. So they celebrated on Shambhaji Maharaj. They celebrated on May 14th Shambhaji Jayanti. Apparently, उनकी birth हुआ 1657 में and उनकी death हुआ 1689. And Maratha Samraj, he ruled from 1681 to 1689. Thank you for this wonderful topic. Sandhya ji, शुरू करिए. गुड इवनिंग मैम. मैं आज छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में तो आवाज आ रही है? यस. अच्छा. छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 में पुरंदर किले पर हुआ और उनकी मृत्यु 11 मार्च 1689 में तुलापुर यहाँ हुआ. उन्होंने 1681 से 1689 तक राज्य किया. वे मराठा साम्राज्य के दूसरे राजे थे. उनको छावा करके लोग कहते थे. छावा का अर्थ है शूर वाघाचे पिल्लू, ऐसा होता है. छावा ये नाम उनको पराक्रम और पिताजी शिवाजी महाराज के तरह वे शूर और धारसी होने के लिए दिया था. वे शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र थे. संभाजी महाराज की माँ सईबाई का निधन उनके सिर्फ 2 साल की उम्र में हुआ. संभाजी महाराज की देखभाल उसकी नानी राजमाता जिजाबाई ने की थी. शिवाजी महाराज संभाजी महाराज से बहुत प्यार करते थे. शिवाजी जब आगरा अभियान पर गए तो उनके साथ संभाजी भी गए थे. उसी समय संभाजी ने औरंगजेब को देखा था. उनकी बचपन से ही शत्रुओं की कूटनीति और क्रूरता की जानकारी उन्हें थी. संभाजी महाराज बहुत ही सुंदर और बहादुर थे. वे कई भाषाओं के विद्वान और बहुत चतुर राजनीतिज्ञ भी थे. औरंगजेब के इशारे पर जब शिवाजी महाराज और संभाजी को कैद करने की कोशिश की गई तो शिवाजी महाराज और संभाजी फलों की टोकरी में वहां से भाग निकले. संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने सभी दुश्मनों की लड़ाई लड़ी. मराठे छोटी छोटी बटालियनों में जमीनी जंग पे मुगल सेना पर हमला करते थे और फौरनी पहाड़ों में वापस जाते थे. रात के समय में ही वे हमला करते थे. संभाजी ने जंजीरा द्वीप
भी अपनी नौसेना के दम पे ही हासिल किया था। संभाजी की शादी जीवूबाई से हुई थी। शादी के बाद उसने अपना नाम येसुबाई रख दिया था। संभाजी को एक छोटी बेटी भवानीबाई और एक बेटा शाहू था। शाहू प्रथम मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने थे। संभाजी ने अपनी वीरता और देशभक्ति से एक पहचान हासिल की थी। उन्होंने कम उम्र में 120 युद्ध लड़े और सभी में जीत हासिल की थी। उनके जैसा भारत में कोई भी योद्धा नहीं था। अपने कम उम्र में और अपने बल के साथ मराठा साम्राज्य का विस्तार उन्होंने किया था। 1689 में संभाजी महाराज को मुगलों ने धोखे से पकड़ लिया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को जिंदा रहने के लिए 3 प्रस्ताव दिए थे। पहला प्रस्ताव था इस्लाम कबूल करने का। दूसरा प्रस्ताव था खुद औरंगजेब को सम्राट मानने का। और तीसरा प्रस्ताव मराठा साम्राज्य की पूरी दौलत औरंगजेब को देने की। परंतु संभाजी महाराज ने ये तीनों प्रस्ताव कबूल नहीं किए। इसलिए संभाजी राजे और उसका प्रिय मित्र कलश को जोकर के जैसे पोशाक पहनाकर औरंगजेब ने पूरे शहर में परेड की। पूरे रास्ते उन्हें दोनों पर पत्थरों की बरसात होती थी। उन्हें भाले चुभाए गए। कभी कलश ने औरंगजेब से कहा, जिस तरह सूरज के प्रकाश को देखकर जुगनू का प्रकाश नष्ट हो जाता है, उसी तरह यह संभाजी राजा अपने सिंहासन छोड़कर अपने पास आया है। इसे सुनकर औरंगजेब बहुत आग बबूला हो गया और उसने कवि कलश की जुबान काटने का आदेश दिया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को 40 दिन बहुत कष्ट दिए, पर संभाजी महाराज ने उनकी एक न सुनी। लाल गरम लोहे की सली से संभाजी महाराज की आंखें निकाली और उनकी जुबान भी काट दी। उनके शरीर के खाल उतार दी और उस पर नमक भी छिड़का दिया। फिर भी संभाजी महाराज डर से मस्त नहीं हुए। उनको फांसी देकर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर चारों ओर फेंक दिए और कुत्तों को खिला दिया। फिर कई लोगों ने वे संभाजी के शरीर के टुकड़े इकट्ठे किए। गोविंद नामक एक महार ने वे सभी टुकड़े इकट्ठे किए और सिलाई करके उसी के ही जमीन पे अग्नि देकर संभाजी महाराज की रक्षा भीमा नदी में डाल दी। औरंगजेब ने संभाजी राजे की हत्या करने के पहले ठीक पहले दिन संभाजी को कहा, संभाजी, मेरे 4 बेटों में से अगर एक भी तुम्हारे जैसा होता तो भाई पूरा हिंदुस्तान तब का मुगल संस्थान में इंक्लूड कर देता। औरंगजेब के चारों बेटे एकदम अच्छे नहीं थे। संभाजी के मृत्यु के बाद मराठों ने एकजुट होकर मुगलों को हराया। औरंगजेब की सत्ता समाप्त कर दी। मुगल शासक आखिरी समय तक दक्कन पर कब्जा कर नहीं पाए। औरंगजेब की मृत्यु 88 साल की उम्र में दक्कन में ही हुई और संभाजी महाराज के श्राप के मुताबिक औरंगजेब को उसी दक्कन में उन्होंने दफन कर दिया। थैंक यू मैम। इतने अच्छे, हम तो और सुनना ऐसे स्टोरी खत्म नहीं होना चाहिए। आज साउथ इंडिया इतने अच्छे हैं तो मराठों ने बहुत स्टॉप किया। दे स्टॉप्ड द मुस्लिम इन्वेशन इन साउथ इंडिया। इसलिए काफी मंदिरों साउथ इंडिया में अच्छे हैं। एक्सेप्ट Yes. जब हम जाते हैं बादामी, हम्पी, उधर तक हम देख सकते हैं कि कितने मेहनत की है कि मराठा साम्राज्यों ने। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी, Thank you. बहुत अच्छे Thank you. बोले, बहुत Thank you. इमोशनली बोले। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। हमारा नेक्स्ट पार्टिसिपेंट अग्रवाल साहब जी, प्लीज आप आइए। आई थिंक आपका टॉपिक बहुत सरप्राइज टॉपिक है, मुझे नहीं मालूम, तो आप शुरू कर दीजिए। थैंक यू। Namaste. First of all, good evening to all my friends. Thanks to Dr. Sen Gupta and Kamala ma'am to invite me to this platform to give my talk. Normally we talk about our own happiness only, but today I'm going to talk about
a concept known as happiness quotient. This happiness quotient is measured actually all over the world depending upon how happy overall the people are. So let's start with that. Am I audible, ma'am? Okay. Happiness quotient is a concept that measures a person's overall happiness or sense of well-being. It can also be a tool to help people understand how they feel about different aspects of their lives. A person's happiness depends on various factors. These have been broadly classified into 5 factors, namely emotional well-being. Our emotions control our reactions to situations and or circumstances we find ourselves in. In extremity, we either tend to be high on happiness or low when upset. A simple mantra in life, change what you can and accept what you cannot change, can save one a lot of trouble and turbulence. Physical well-being. Physical health is equally proportional to your happiness. In a healthy body lives a happy mind. Maintaining a healthy body is not just a priority, but the results of a routine are gratifying. Mental health. Mental health is considered the least important by many. Considering the stressful times we are living in, it is essential to take care of our mental well-being as well. Spiritual growth. Spirituality is your connection with your inner self. Being spiritual means becoming aware of your life purpose and making a connection with your higher self. Professional growth. We all look for avenue at work that help us make better professional choices, whether it is changing jobs, finding a friendly environment at the workplace, or learning new skills. Working in a competitive world, it becomes difficult to climb up the professional ladder if we do not update our skills regularly. India. Now let's see where is India standing on this. India ranked 118, up from 126 in 2024, out of 150 countries in the UN World Happiness Report released recently on March 20th, 2025. India is reported as not very happy in the world due to several factors, including social issues, caste-based discrimination, gender inequality, and social prejudice continue to plague Indian society. Mental health crisis. India has been experiencing a mental health crisis which has been attributed to increased sales of antidepressants and mood stabilizers. Economic policies. Economic policies need to prioritize job creation, poverty alleviation, and equitable wealth distribution. Focus on economic development. India's focus on economic development may have moved the focus away from environmental sustainability, social welfare, and emotional and mental well-being. Other factors that influence individuals' assessment include life expectancy, social bonds, personal freedom, and corruption. Now, let's talk about Finland. Finland ranked as the happiest country in the world for the 8th year in a row in the 2025 UN World Happiness Report. Some of the factors that contribute to Finland's happiness include trust and freedom. Finns tend to trust their neighbors, public officials, and government. Finland is also ranked highly for political, civil, and press freedom. Low income inequality. The difference between the highest paid and the lowest paid is relatively low. High social support. Finns have a strong sense of community and relatedness. Proximity to nature. Finns enjoy the opportunities for recreation and relaxation that nature offers. Gender equality. Finland has one of the most gender equal societies in the world. Parental leave. Finland has one of the most generous parental leave allowances in the world. Low stress lifestyles. Finland's low stress lifestyles nurtures creativity. Midnight sun. In the summer, the sun doesn't set in some parts of Finland, which can energize people. Now coming to the international rankings.
Data is collected from over 150 countries as per the latest report. While India ranks at 118 out of 150 countries, the United States ranks 24th, China ranks 68th, and a majority of the countries ranking among the top 8 are from Scandinavian region. Afghanistan ranks as the last in the list. Thank you very much. Thank you. धन्यवाद अग्रवाल सर, थैंक यू सो मच। इतना सारे ब्यूटीफुल फैक्ट्स, हमें इतना ही पता था फिनलैंड वाज वेरी फेमस फॉर इट्स एजुकेशनल सिस्टम, बट ये नहीं पता था कि हैप्पीनेस कोशेंट, मेंटल वेलबीइंग एंड health, physical health, everything was so good that they are ranking the prominent in the happiness quotient. Thank you so much. और कोशिश करते और प्रार्थना करते कि हमारे देश में भी हम सब लोग उतने ही ऊंचा और सुख रहे। तो हर दिन हमारे जो योगा बोलते हैं कि हम स्वस्थ हैं, हम खुश हैं। Thank you very much. खुश है रहना। थैंक यू अग्रवाल जी, बहुत ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। Our next participant, always the one who captures beautiful pictures of MRL programs, which is offline as well as online. So all of you know this lovely personality, very quiet working, but the best of pictures comes from his lens. Naveen Dugalji. Welcome to Naveen Dugalji to inspire your topic. Namaste, sir. Can you hear me? आप ही हमको सरप्राइज नमस्ते। देने वाले है ना? ठीक है, बोलिए। सरप्राइज तो जिंदगी का एक सरप्राइज होता है। नहीं, जब उसमें आते हैं तो एक खुशियां happiness मनाते भी- हैं, जब जाते हैं तो पता ही नहीं चलता। बोलिए सर। चलो, मैं कोई ज्यादा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि आज आपको सबको पता होगा कि मैं मोस्ट अनप्रिपेयर्ड पर्सन हूँ। आज भी मैं प्रिपरेशन की लर्निंग आपकी सबकी दुआ से, आशीर्वाद से, डॉक्टर सेन गुप्ता, सैमता मैम, रमनी सर, अग्रवाल वगैरह वगैरह, उषा दीदी के सबसे सीखता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो आजकल हम इस उम्र में इस हाल में आ गए हैं, बहुत सारी कथाएं पढ़ ली, साइंटिफिक स्टडीज कर ली, यूएन काउंसिल भी चले गए और हमारी जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत सुन लिया। लेकिन ये जो असली जो टॉपिक है, सबकी सुनो के बजाय मेरी अपनी सुनो पहले। अगर मैं मुझे अपने आप को सुन लूं तो मैं कितना बढ़िया बंदा हो सकता हूं, सबसे बेस्ट एक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर, डायरेक्टर वगैरह वगैरह। अब ज्यादा वक्त ना लेते, चलो एक छोटी सी एक्सरसाइज करें। ये हाथ हिलाते हैं हम लोग। ओके एवरीबॉडी, प्लस ज्वाइन मी, हाथ हिलाओ, थोड़ा वार्म अप करो ताकि आपको नींद ना आए, मेरी आवाज ना आए। आज मैं कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, टॉपिक का टाइटल आपने देना है और मैं एक छोटी सी मेडिटेशन करने वाला हूँ राम के ऊपर। ओके, टेक ए डीप ब्रीथ इन एंड लेट गो। टेक अनदर डीप इन, breath in and let go। और अगली ब्रेथ से हम लोग बोलेंगे राम 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 राम। Keep doing राम 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 राम। Relax. Again we start Ram 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 Ram. Relax your mind, relax your body, relax your soul. Just feel the silence within you. Ram, Ram,
Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram. Relax your body, relax your mind, relax your soul. Let go, let go, let go, let go. The next step will be feel yourself happy, feel yourself strong, feel yourself successful, and feel energetic, and gradually open your eyes and look in the screen. Ram Ramji, Namaskaram. Now, what was the idea of this practical demonstration, which I just said about Ram? It is you're fully focused on what I said, what Ram said, and we were in all one, the oneness of all and all in one. So whenever we get up in the morning, you should say that I am so privileged that I am back in this world with energy and positivity, and I'm going to make a difference and a better performance than yesterday. So we are done the move your body. The next is that you are what you eat. Everyone know. And then you have a purpose of life that you all already know. You have been doing the worldly things, the spiritual things, the financial growth, the mind growth, the health growth, etc. Now, due to the weather and condition changing, we need to drink more water. Now, I don't mean to say when somebody says he drinks 8 liters, 3 liters, 2 liters, see what you like and what is the requirement of your physical body. Surround yourself with people you love. Now, since you are listening to me and I'm listening to you, I'm with you in this My Retired Life Foundation group. So we are all not one only, but we have the spirit of oneness. And then another thing is, we are doing different things at different things. Thanks to Dr. Sen Gupta, Samta Man, and many other experts, that we have been always taking risk. We have been dancing, we have been having laughter club, we are having photographic society to display our skills. Like me was just a anguta chap, but today I'm the fastest finger who can take any photograph with a camera. Now, the more important thing is we overdo at this old ages. Don't overload yourself. Too much of information, too much of anxiety, too much of unnecessary responsibility of others. लोग क्या कहेंगे? मेरे बच्चे कैसे हैं? Attachment and detachment, which is Lord Krishna in Gita has already mentioned, and you know about it. And then most important, due to the digital and this improvement of AI technology, since we are trained in the old school of thought of one thing at a time, one focus at a time, one target to shoot at a time, we were practicing that in sports, in archery, in war, in using anything, arms, driving, skills, anything, motor skills. So don't try to multitask too much, because at this age, our retention power is very less. So we have to go according to what we have, what we can listen and do it. And if we cannot do it, say so. Don't worry about that. You don't know. Don't reject yourself. Don't talk negatively about yourself or the environment. Then more important is, while we are doing this, we are listening to the media, then we are eating food, which our ancestors have taught the good habits. While eating food, eat only food and enjoy the taste, the smell, the flavor, and the tongues, the saliva, what it mixes with it, which goes inside the stomach. And the rest, in the morning it happens when it is eliminated. So we have to eliminate all distractions, especially news media, all these high risk of shares and all the values. Then another important is try to prioritize what you want to do in the day. That is having a sense of urgency. Many times we say this is also urgent, that is also urgent. I don't feel like discarding this. I will do later. So we become the big lazy bum. So no, we are not lazy bum. We are active bums.
not atom bombs, but active bombs. Okay. So now with a smile, I would like to say on tips on techniques, what others are also doing. There are a lot of books written, but more than that is the practice of having a chat with someone. Have a story writing session. Writing of everything what you like is not possible at this age because our fingers are shaking. I am shaking. So do at least some dancing, some body motion. The whole idea was focused on your individual personality development, which I spoke. Now the next is have a daily goal setting, daily, not monthly, not weekly, not after. And whenever you remember someone or something special to be done, please write it down or record it on your WhatsApp or somewhere so that you can and listen to it and recall it, where you are and what you do. Now, what is after doing all this daily routine? How can you help others? Be kind to others. Do at least 3 things of kindness daily. Whether you have a cat, a dog, or a crow, or a bird, or any tree, or you do some any small gardening project. So this project will keep you with a fixed focus that I have to achieve something to have my satisfaction, my capability, my liking. So I have not come here to give lecture on your moral class, but the whole thing was, I just wanted to say, this is what it matters, the big smile. So learn to focus and you take as many selfies as you can every day of your smile. How do I look? मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त. With that, each one of you is मस्त मस्त. खुश रहो, आबाद रहो, और आगे बढ़ो. और अपना नाम ही रोशन नहीं करना है, लेकिन हर बंदे का धन्यवाद करो. We have the gratitude of attitude. With that I end. Namaskar. I hope you like my small lecture. वाह वाह राम जी बोलने का है ना सर. राम जी. राम जय राम जी. यस, सो ब्यूटीफुल. 4 मिनट में आप इतने छोटे से कैप्सूल में हमें कैसे जीवन जीना है, फ्रूटफुली, फुलफिलिंग, एट द सेम टाइम हमारे हेल्थ को अच्छे रहे, मेंटल, फिजिकल, एवरीथिंग, ताकि हम कब ना बोले, कब हाँ बोले, कब सबको याद रखे. इतने शॉर्ट पीरियड में सब कुछ आपने एक झलक जैसे दिखा दिया. सो ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच नवीन जी. Thank you. This is what is called to be Indian, and be Indian, my India. Yes. And each one of you are great souls. The most powerful energy I have. Thank you. Through you only I learn. Thank you. सबसे हम भी सीखते हैं ना सबसे. I call upon, thank you so much. हमारे next star of the day always is rocks on the stage, Samata ma'am, now, and on instruments, on singing. And this is the first time I'm going to hear her also talk in this program. And you know, at her request, it's going to be a surprise. So it's a surprise on what she wants to speak today. All ears to you, Samata ma'am. Welcome. Oh, thank you very much, Kalpana. Thank you very much, dear. ये तो surprise, जब बड़ा surprise तो नहीं है. And first and foremost, I am thankful for this opportunity given. And another second point, excuse me for my sore throat. Throat is very bad today. Please bear with my voice. And okay, now I'll start. एक्चुअली ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि मैं जब बाहर जाऊंगी तो ऑटोस में बहुत घूमती हूँ, यहाँ से वहाँ से यहाँ, ऑटो में बहुत घूमती रहती हूँ, और मेरे साथ बहुत ही इंटरेक्शन होता है ऑटो वालों के साथ. एक एक्सपीरियंस, बहुत सारे हैं, एक डेफिनेटली डिस्कस करना चाहते हूँ. और एक बार क्या हुआ, मुझे एक स्वीट शॉप में जाने का था, तो मैंने मेरे होम से ऑटो वालों को रिक्वेस्ट किया, बेटा मुझे शॉप में जाने का है और वहां से वापस भी आने का है, आपको शॉप में लगेगा 2-3 मिनट, मैं वापस आ जाऊंगी. फिर उसने बोला हाँ माँ जी चलिए. तो चल पड़े हैं दोनों. तो शॉप आ गया. फिर वो मैंने उसको रोकने को बोला है, और मैं बिफोर आई गॉट डाउन फ्रॉम द ऑटो आई रिक्वेस्टेड द ड्राइवर, देखो बेटा मेरा आंख नहीं दिखता है और मैं जैसे शॉप से बाहर आती हूँ आप मुझे आवाज दे दो. फिर उसने बोला हाँ माँ जी कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए. तो मैंने फिर शॉप में
जाने की कोशिश किया, बट आई हैव सेलेक्टेड ए रॉन्ग थिंग, सेलेक्टेड ए रॉन्ग दिस थिंग, बिकॉज वहां नहीं उतरना चाहिए था मुझे। दो शॉप में मुझे स्वीट शॉप में जाना था, दैट वाज नॉट देयर, दैट इज ए फ्यू मीटर्स अहेड। तो मैंने पूछा पास वाले को, ये वाला शॉप कहाँ है? तो दे सेड कि वो तो बहुत यहाँ से बहुत दूर है, 2-3 मिनट वॉक है। तो मैंने सोचा ठीक है, 2-3 मिनट्स पैदल गई, पूछते पूछते गई, शॉप मिला था, अंदर गई थी, परचेज किया है, वापस आया है। फिर सोचा मैंने हाउ टू वॉक बैक डाउन बैकवर्ड्स, क्योंकि ऑटो को छोड़ा बहुत पीछे। तो सडनली, अभी ये आपको ध्यान से सुन लीजिए, सडनली आवाज आया है, माँ जी, आंटी जी, मैं यहाँ पर हूँ। तो आई वॉज स्टन्ड। तो मैं गई थी, वो ही सेम ऑटो वाला। मैं उससे पूछा था, बेटा मैंने आपको तो बहुत पीछे छोड़ा है, आप यहाँ कैसे आ गए? तो आप और भी ध्यान दीजिए, उसने बोला है मेरे से, माँ जी आपने पहला क्या बोला है, आपका आंख नहीं दिख रहा है, तो मुझे फिर आप, मेरा जिम्मेदारी बनती है आपके ऊपर ध्यान देने का, इसलिए आप जैसे फुटपाथ में आगे जा रहे थे, मैं आपको फॉलो कर रहा था रोड में, दैट मीन्स ही इज फॉलोइंग मी पैरेलली ऑल्सो। सो जैसे ही शॉप से मैं बाहर आ गए, उसने मुझे आवाज दे दिया। नाउ आप भी देख लीजिएगा, उनका उसका बड़ापन, वो ओल्ड पर्सन को, एक ओल्ड लेडी को अपने ही मदर जैसा इतना ध्यान दे रहा था। तो मुझे आई वाज जस्ट टच्ड बाय हिज जेस्चर। तो मैंने बोले, बेटा आप जैसा लोग है करके हम बुजुर्ग लोगों का जिंदगी चल रहा है, यू आर रियली ए वेरी काइंड पर्सन, ये आप कंटिन्यू करो, हम हमारे जैसा लोगों के ऊपर भी नहीं, जिसका जरूरत है उनके ऊपर भी ये आप कंटिन्यू करो। इसलिए मैं हमेशा क्या करती हूँ, आई नेवर टेक बैक द, छुट्टा जो भी बचता है, आई नेवर टेक बैक द चेंज, ये मेरा हैबिट है। और जो मैं पसंद करती हूँ दिल से, मेरा दिल खुश रखने के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए मैं ज्यादा देती हूँ, वो मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए। तो मैंने बोला उसको, मैंने ज्यादा पैसा दिया है। वो बोला, आप मुझे ज्यादा पैसा क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं बेटा, ये आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा सेटिस्फैक्शन है, नहीं तो मुझे रात को नींद नहीं आएगा। तो मैंने जबरदस्त उसको ज्यादा पैसा पकड़ाया और उसको बोला है, ये जो क्वालिटी आपने मेरे ऊपर दिखाया, वो कंटिन्यू दैट, बिकॉज आपके जैसा लोग कम रहते हैं, आपका जैसा लोग रहना इस दुनिया में वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पैसे वाले रहेंगे, बहुत घमंड वाले रहेंगे, बहुत सीईओ पता नहीं क्या क्या लोग रहेंगे, लेकिन आपके जैसा लोगों का बहुत जरूरी है इस दुनिया में। फिर मैंने उसको थैंक यू बोला, पैसा ज्यादा पकड़ाया। तो ये हमेशा ध्यान रखना है सब लोगों को, जो लो इनकम ग्रुप जो रहती है, उनको हमको बहुत इज्जत देना है, बहुत प्यार देना है उनको, और उनको दे डिजर्व ए लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। ये बहुत अच्छा काम किया है मैंने, हमको लेट अस एप्रिशिएट हिम। और ये तीनों से काम नहीं चलेगा, जो काम चलेगा कैश गिफ्ट, वो तो जरूरी है, वो उसका काम में आएगा, और वो भी देना है और ये भी रखना है, और उस पर्सन को हमेशा दिल में बहुत प्यार से याद रखने का है। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंसेस बहुत है, एक एक शुरू करेगा तो पूरा सेशन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आई वांट टू शेयर दिस वन एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू। तो ऐसे लोग को दुनिया में, इस धरती में, इस भारत में रहना बहुत जरूरी है। पैसे वाले घमंड वाले ये सब सीईओ वीओस बहुत, ऑफिसर्स बहुत है, लेकिन ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं, दिल भर जाता है। आई विल बी रियली टच्ड बाय हार्ट बाय सीइंग विद दिस पीपल, बाय इंटरैक्टिंग विद दिस पीपल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी गिवन। थैंक यू कल्पना। Thank you so much, ma'am. Like recognizes like, so he recognized a kind person and equally kind to you. And yes, it is so comforting to know कि ऐसे लोग हैं और हम भी उनको कैसे ट्रीट करना है ताकि हमें उनको भी खुश रहे और हम भी खुश रहे। थैंक यू समता मैम, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड स्टोरी, थैंक यू वेरी मच। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आर के मोदी जी है, और आर के मोदी जी वेलकम। आपकी हिंदी के मैं कभी भी मैच नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए ऐसी बात नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। वेलकम सर, बोलिए। थैंक यू
थैंक यू कल्पना जी। आज मैं युद्ध वार पे कुछ बोलूँगा, युद्ध पे। युद्ध, वार इज कर्स और बोन। ये मैं आज के संदर्भ में नहीं बोलूँगा कि अभी जो वार हो रहा है शायद उस पर बोलेंगे। मैं ये पुरान काल से युद्ध क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पे बताऊँगा। तो हिंदी में उसका अनुवाद है युद्ध अभिशाप या वरदान। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, महत्वाकांक्षी और अहंकारी होता है। वह स्वयं को, अपने विचारों और सिद्धांतों को अन्यों की तुलना में श्रेष्ठ मानता है। ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, प्रतिस्पर्धा और दूसरों से स्वयं को अधिक शक्तिशाली दिखाने की प्रवृत्ति भी मनुष्य में होती है। इन्हीं आसुरी गुणों के कारण विश्व में अशांति रहती है। सभी धर्म, धर्माचार्य, धर्म ग्रंथ आसुरी गुणों पर दैवी गुणों की विजय का आह्वान करते हैं। पर इस विश्व का इतिहास बताता है कि देवासुर संग्राम से लेकर द्वितीय महायुद्ध तक और उसके बाद भी विनाशकारी युद्धों की अटूट श्रृंखला पूरे विश्व में चलती रहती है। अभी का उदाहरण है, अभी जो रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, हमास और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है, आदि आदि। और लगता है भविष्य में भी युद्ध होते रहेंगे। सारांश यह कि युद्धों का कारण मनुष्य की आसुरी प्रवृत्ति, दूषित मनोवृत्ति और रुग्ण मानसिकता ही है। प्राचीन काल में माना जाता था कि जो कुछ होता है वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, परंतु आज के विज्ञान, भौतिकवादी एवं तर्क प्रधान युग में ये मान लिया गया है कि मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माता है। वही अच्छे बुरे कर्म के लिए उत्तरदायी है। स्वार्थों की टकराहट, दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के बीच तनाव और संघर्ष से ही राज्यों के बीच युद्ध होता है। त्रेता और द्वापर युग में तथा उसके बाद भी प्रथम महायुद्ध तक जितने भी युद्ध हुए वे सीमित थे। सीमित इस अर्थ में कि युद्ध का क्षेत्र, सैनिकों की संख्या सब सीमित होती थी। युद्ध प्राय सेनाओं के बीच होता था, अतः ये युद्ध सामान्य जनता के लिए इतने विनाशकारी नहीं होते थे। पर द्वितीय विश्व युद्ध ने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने बता दिया कि अब युद्ध की विविधता से मानव जाति का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। युद्ध के समय सेना में युवकों की भर्ती से कृषि उत्पादन कम होता है। कारखाना में दैनिक उपयोग की वस्तुओं के बदले युद्ध सामग्री का उत्पादन होता है, अतः सब जगह वस्तुओं का अभाव दिखाई देता है। महंगाई बढ़ती है, मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, राजकोष को भरने के लिए नए नए कर लगाए जाते हैं। अतः युद्ध का प्रभाव देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और सामान्य नागरिक कष्ट पाते हैं। प्राचीन काल में महाभारत जैसे युद्ध की आचार संहिता होती कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा, युद्ध केवल युद्ध भूमि में होगा, केवल सैनिकों के बीच होगा। आज इस प्रकार की कोई आचार संहिता नहीं है। रात के समय वायुयान नगरों पर बम वर्षा करते हैं और विनाश द्वारा नागरिकों का मनोबल तोड़ते हैं ताकि शत्रु देश की सरकारें आत्मसमर्पण कर दें। सारांश यह है कि आज युद्ध से अपार जनधन की हानि होती है, लाखों व्यक्ति मारे जाते हैं, लाखों विकलांग हो जाते हैं और जो बचे रहते हैं वे शायद अनेक रोगों का शिकार हो जाते हैं। परमाणु बम, जैविक तथा रासायनिक बम ने इस स्थिति को और भी भयावह और विकराल बना दिया है। अतः युद्ध मानव जाति के लिए अभिशाप ही है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराना इसका ज्वलंत उदाहरण है। यदि तृतीय विश्व युद्ध छिड़ा तो संपूर्ण मानव जाति का विनाश हो जाएगा। युद्ध से कुछ लाभ भी हो सकते हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या कम होती है, राष्ट्रीय चरित्र बनाने का अवसर मिलता है। हम छोटे छोटे स्वार्थों तथा झगड़ों से ऊपर उठकर एक हो जाते हैं। भारत पर जब जब भी संकट आया
उसने अभूतपूर्व एकता का परिचय दिया। साहस, धैर्य, कष्ट, सहिष्णुता के भाव उत्पन्न होते हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जन्म लेती है। कार्य कुशलता बढ़ती है। आत्मबल उत्पन्न होता है। अस्मिता का भाव जगता है। राष्ट्र कमजोरियों से ऊपर उठकर सबल बनता है। किंतु ये लाभ जो हैं, जो विनाश होता है, उसके तुलना में बहुत ही कम है। युद्ध में विनाश और मानव जाति के अस्तित्व के लुप्त हो जाने का खतरा इतना भयावह है कि युद्ध को मानव जाति के लिए अभिशाप ही कहेंगे। धन्यवाद। मोदी जी, थैंक यू सो मच। आपने पूरा वॉर की कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे राइट फ्रॉम सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आपने पूरा बताया, उससे पहले का भी महाभारत वॉर, एंड उसके बाद लाभ भी कुछ कुछ जो भी है। बट आज सुबह ही हम जब बात कर रहे थे तो हमें इतना पता नहीं चला ऑपरेशन सिंदूर का कुछ असर हमारे ऊपर नहीं पड़ा। बट ये लोग जो जामनगर में रहते थे और अदर एरिया, तो दे वर टॉकिंग अबाउट कि 3 दिन पूरा ब्लैकआउट हुए एंड हाउ इट वाज गोइंग। सो प्रार्थना ही करना है कि देश अच्छे रहे और सब सुख रहे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। थैंक यू सो मच मोदी जी। थैंक यू। आपने मेरे इसका इतना अच्छा विश्लेषण किया। धन्यवाद। Madam, you are Sundari Iyer, muted. ma'am, welcome. So someone who is defies her age in terms of her dancing, in terms of her spirits, in terms of her motivation. Today she's going to talk on the topic of old age. Sundari Iyer, ma'am, welcome. Yeah. Yes. Come in. Namaste. I am audible? Yes, yes. Yeah. I am talking about old age. Actually, old age is not a curse. सबको नहीं ये चांस नहीं मिलता है ये इतना साल रहने को, लेकिन हमको जो मिलता है वो अच्छा के लिए ही है। ये ओल्ड एज में हम लोग कितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करने का, जस्ट लाइक समता जी एंड सेनगुप्ता जी। And we have also got a room for the old age people, senior citizens. Actually, we should not say old age people. It is senior citizens. So we actually we were every day we used to meet there, and so every day some program will be there. And we will meet and talk, and Ramayana, Gita, Shiva Puran, Mahapuran, everything is going on, and everybody is very happy. Like that, 1 hour saves 24 hours. I am telling them that we are so happy that this 1 hour is very important, because we are meeting every day, and we are talking to each other, and that is very good. Like in old age is sometimes the children don't want to keep the parents with them. They will leave them to the old age home, but it is not correct. I think it is very bad. They also want to live. they इतना मुश्किल से हम लोग को बड़ा किया है, तो उन लोगों को भी एक चांस देने को अच्छा से लिव करने, अपना पोता से पोती से प्यार करके अच्छा अच्छा बात बता के सब लिविंग करने का चांस तो देने का ही है हम लोग को, देना ही है। ओल्ड एज होम में डालना बहुत इट इज वेरी बैड। लेकिन क्या करेगा, हमको हम लोग ओल्ड एज में मैं भी तो ओल्ड एज होम में जाके देखा है, लोग को इतना ये होके रहा है, क्योंकि लोग को कितना भी खाना में मिलता देता है तो भी वो घर को बहुत होता है अपने बच्चों को,
बच्चों को सब बहुत मिस करते हैं। तो इसलिए माँ को पेरेंट्स को नहीं छोड़ने का है। हम उन लोग कितने समझना चाहिए कि ओल्ड एज होम में कभी नहीं छोड़ने का। और दैट इज वेरी वेरी बैड। वो सबका मुंह में एक ये वेरी वेरी सैड लुक रहता है। मैंने उनको पूछा आप कैसा है? ये ठीक है, लेकिन मेरे को बच्चों को याद आता है। कभी माँ बाप ने अपने बच्चों को शाप नहीं देता है। दैट इज ऑलवेज दे विल ब्लेस ओनली। बच्चों बच्चों लोग को देखने को बहुत मन होता है, लेकिन मेरा बेटा तो आता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। कितना महीना हो गया, कितना महीने से मैं ऐसा ही है। ये मरने के बाद भी इन लोग नहीं आता है। ओल्ड एज होम वाला ये उन लोग को दे देता है, सब कुछ करता है। ऐसा क्यों करने का है? ये मुझे बहुत खराब लगता है। हम लोग भी सब ओल्ड है, लेकिन सम वी कैन नॉट ब्लेम एवरीथिंग टू टीनेजर्स ओनली। बहू को ही सब दोष नहीं देने का है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम लोग थोड़ा हेल्प भी करने का है। जैसा बच्चों को स्कूल छोड़ना, मार्केट जाना, दूध लेकर आना, ऐसा थोड़ा हेल्प हमको कितना कर सकते हैं उतना करने का है। दैट इज वेरी गुड। अदरवाइज दे विल ऑल्सो, बड़ा लोगों को मुंह देके उन लोग को अच्छा नहीं लगता है। और वो बोलता है बेटा को, ये माँ को है ना, हमको अच्छा नहीं लगता है देखने को। इसको ओल्ड एज होम में छोड़ के जा रहे हैं हम लोग, यही अच्छा है। तो बेटा भी बहू का सुनता है, माँ बीवी का सुनता है, और ओल्ड एज में डालते हैं। ऐसा कितना ओल्ड एज है इंडिया में, बिकॉज पेरेंट्स को रखना नहीं चाहते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन ये अच्छा नहीं है, ओल्ड एज होम में डालना बहुत खराब है। इसलिए मैं बोलती हूँ कभी भी माँ पेरेंट्स को अपने पास रखो, ओल्ड एज में मत छोड़ो। और ये पेरेंट्स को रखना एक मंदिर में भगवान को प्रेयर करने का जैसा ही है, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुंदरी मैम। यस, जो ज्यादातर वी सी दिस साउथ ऑफ इंडिया, नॉट मच आई थिंक इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, जहाँ सीनियर सिटीजन्स आर इन सीनियर लिविंग होम। बट द अदर साइड एज आई थिंक ऑफ इट इज कि हमने कभी कभार उनको बहुत मोटिवेट किया कि विदेश जाओ, विदेश में कमाओ, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा बढ़ाओ, फिर उनको वापस आने की मौका नहीं मिलता है। तो एंड आई थिंक वो चेंज भी हो गया कुछ कुछ जगह पे, जहाँ हम ही खुद ही वी लाइक टू बी अमंग आवर सीनियर पीपल एंड एंजॉय। जैसे अभी माय रिटायर्ड लाइफ फाउंडेशन एक सम्राट हो गया, और सो ब्यूटिफुल एंड सो लवली। यस, वी हैव टू पास दिस मैसेज टू ऑल द नेक्स्ट जनरेशन कि जितने हो सके कि माँ बाप के साथ रहे, उनकी अनुभव को हमें सौंपना है और मर्यादा भी देना है। थैंक यू सो मच सुंदरी मैम। वेलकमिंग द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट विजयलक्ष्मी जी। Vijayalakshmi ji is going to talk about an article which she loves to, which she read and she would share with us. Vijayalakshmi ji, welcome. Yes. Yeah. I think I'm not coming down. Yeah. Hello. Yeah. Can you see me? Can you hear me? Okay. 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 Yeah. Good evening to all MRL friends. Thank you, Sengupta sir, for giving me yet another opportunity to speak in Sab Ki Suno platform. Thank you, Santadi, and our anchoring madam, Kalpana ji. This article I had read recently, and I liked such a poignant topic, though thought of sharing it in this MRL platform. So let me begin. It's Let's Go Dad. Yeah. Okay. Anton Chekhov writes in one of his stories, at the bus stop, an old man and a young pregnant woman were waiting together. The man kept staring at the woman's round belly, intrigued. Then he gently dared to ask, "How far along are you?" The young woman seemed elsewhere,
Lost in thought, worry was written on her tired face. At first, she didn't answer. Then, after a few seconds of silence, she murmured, I'm at 23 weeks. Is this your first child? He asked. Yes, she replied, her voice barely audible. Don't be afraid, he added. Everything will be all right, you'll see. She placed a hand on her belly, looked straight ahead, her eyes shining, fighting back tears. I hope so, she replied. The old man continued. Sometimes we let ourselves be overwhelmed by worries that in truth don't deserve it. Maybe, she whispered sadly. He looked at her more closely with more compassion. You seem to be going through a hard time. Your husband, is he not with you? He left me 4 months ago. Why? It's complicated. And your loved ones, your family, friends, no one to support you. She took a deep breath. I live alone with my father. He's ill. A long silence. Then the old man asked, is he still the pillar you once knew as a child? Tears rolled down the young woman's cheeks. Yes, even now, even in his condition, what's wrong with you? What's wrong with him too? He no longer remembers who I am. She spoke those words just as the bus arrived. She stood up, took a few steps, then changed her mind, came back to the old man, gently took his hand and said tenderly, let's go, lad. And that shows how much she was in touch with him, the gratitude and the compassion which the old man showed as a father, as her dad. Thank you very much. Thank you, Kalpana ma'am. Oh, so beautiful. We can see, feel the heart tearing that she too much to take care of her father and her, unborn child. On But child. yet the words of the father makes her feel, I can go ahead. She musters up her strength again to take her father back. Thank you so much. Very beautiful. And when I also read this a few days back, tears rolling down. Yes. Beautiful, lovely. Thank Yeah, you that's so why I much. thought of sharing it. Thank you very much. Thank you. Beautiful. Thank you. Next participant, Usha Didi ji, welcome. And she is going to talk about on the topic loneliness. Usha Didi, welcome. Thank you. Thank you, Kalpana. Good evening, friends. Thanks the MRL team for letting me this. The headline of my topic is today is the beauty of being alone. Can you hear me, Kalpana? Yes, Hello? yes, all good. Continue. Yeah. The headline is the beauty of being alone. Being alone, जिसको हम तन्हाई कहते हैं, उसके ऊपर एक शायर ने क्या लिखा है, दिल के रास्ते में कैसी ठोकर मैंने खाई, टूटे ख्वाब सारे एक मायूसी है छाई, हर खुशी सो गई, जिंदगी खो गई, तन्हाई तन्हाई मीलों है फैली हुई तन्हाई. There's a lot of fear around spending time alone. It can make people bored and sick. It can carry a stigma, especially if you are single. One study warns us about the dangers of loneliness. It says it's as bad as smoking 15 cigarettes a day, and it is the main cause of depression and dementia. So we get the message that loneliness is very bad for us. But
What we miss in this message is that all alone time is not bad. There is a difference between loneliness and solitude. One is dangerous and the other is a skill that we have to nurture. So what is loneliness? It's a state of mind when there is sadness about lack of companionship or social isolation. Being alone is not the only way a person can feel lonely. A person can feel lonely in a group of people also. This is the feeling of a lonely person. ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है. ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है. ऐसी तन्हाई है कि मर जाने को जी चाहता है. And being alone is when you are by yourself. We do so many activities alone, like reading a book, doing artwork, cooking, etc. This kind of alone time is healing. Solitude is a positive state of being free of demand of others. While loneliness threatens our health, solitude can be liberating. It provides the space for creative thinking and self-knowledge. मैं अपने साथ रहता हूँ हमेशा. मैं अपने आप रहता हूँ हमेशा. अकेला हूँ मगर तन्हा नहीं हूँ. Loneliness is a biological signal like hunger and thirst. Our bodies are giving signals to find social support. But when we are in touch with our lone sensors, we use the healing version of alone time. So why should we feel bad about being alone? We might have more control of how connected we feel with others. If you feel connected with your loved ones, even when they are not around, you can feel socially connected. You can boost the sense of connection by reaching out for help when you do feel lonely. People tend to underestimate how they will enjoy a solo activity. It is worth a try, even just once. Dining out alone can inspire a romanticism. Bringing a book to coffee shop is a gift. Taking a solo hike allows you to observe things better than with a companion. Doing a creative project is a beautiful solitude style. There are other activities that connect you to others, like writing letters to loved ones or practicing loving kindness meditation. Solitude is like any other social interaction. Sometimes being with friends is all good and energy is right. But other times, if someone is complaining too much about something, you lose the vibration. Then you feel that I was better off alone only. When you plan beautiful moments just for you, like taking yourself shopping, hiking, roller skating, or whatever, you get to be the sole architect of your experience. There can be a certain amount of romance to it. एंड में मैं यही कहूंगी कि जिसने भी तन्हाई में जीना सीख लिया, जिसने भी तन्हाई में जीना सीख लिया, उसी से रूबरू है जिंदगी. हकीकत तो ये है कि भीड़ में भी तन्हा ही होता है आदमी. हकीकत तो ये है कि भीड़ में भी तन्हा ही होता है आदमी. जो अकेला बैठा है उसे तन्हा नहीं कहते. जो अकेला बैठा है उसे तन्हा नहीं कहते. न जाने कितने ख्वाब आबाद हों उसके सीने में. न जाने कितने ख्वाब आबाद हों उसके सीने में. So we should be alone but not lonely. That's all. Thanks. Good night, everybody. Wow, Usha Didi ji, you took us from explaining about what is loneliness, what is solitude,
and went on to the road. It's almost like a path you gave us, what we will go through. And finally, also as to how we can handle this solitude or the loneliness so beautifully. I could picture the whole, way that you can take us. And it reminded me of Robert Frost, The Road Less Taken poem also. Thank you so much. बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा. Thank you very much. Calling Thank you. the next participant on is Padma Kiniji. Padma Kiniji. She is going to talk on permanent address. Welcome, Padma Kiniji. Thank you, Kalpana ji. It is my privilege to participate in this Sab Ki Suno, Sab Ka Suno program conducted by Dr. Sen Gupta ji. My thanks to him. And I'm going to narrate. I read an article last week which was written by Javed Akhtar on his 80th birthday. So he wrote about his ancestral house, which I'm going to share with you. I want to share with you in his own words. Ours is a joint family home, housed 14 of us from age 5 to 95 years. Today, I watch both the houses, 2 houses they had, abandoned and nature taking over the garden my mother used to tend for hours every day. The jasmine, the drumstick, and the few ashoka trees, neem, and people have survived, but all beauty is both transient and fragile, and the law of entropy is powerful. The lovely flowers of myriad colors have all gone. I wonder what happened to the peacock family that came every day and ate from my mother's hand. The bulbul, the sparrows, the parrots, spotted flycatchers, cuckoos, a huge troop of monkeys that once in a month would upset the order of the place. Once people leave a home, it becomes a house. Initially, I did not feel like selling, and now I don't feel like going. Time has taken away 10 of its 14 occupants. I walk around our neighborhood and see similar fate of so many homes, once full of life, now replaced or lying still. Why do we stress and stretch? Why do we stress and stretch to build houses? Stress to build houses. In most cases, our kids won't need it or worse, fight over it. What is the human folly of attempting permanent ownership in a leased life? It is connecting to God here. Ownership in a leased life with an uncertain tenure given by a landlord whose terms are non-negotiable and there is no court of appeal. He is connecting to God here and our age span. One day, all we have built with love and EMI will either be demolished, fought over, sold, or lie in ruins. Every time I fill a form that asks for permanent address, I smile at a human folly. There is a Zen story that an old monk walked into a king's palace demanding that he wanted to spend the night in this inn, INN, and the guards told him, "What inn? Can't you see it is a palace?" The monk said, "I came here a few decades back. Someone was staying there. A few years later, someone else took over the throne from him, then someone else. Any place where the occupants keeps changing is an inn." George Carlin says, "House is just a place where you keep your stuff as you go out and get more stuff." As houses get bigger, families get smaller. When the house is full of occupants, we desire privacy. And when the nest empties, we crave for company. Birds and animals must be laughing at us humans who give up living
in order to build their dream home and in the end depart the inn they mistook as a permanent residence, the real folly of human desire. Even my father-in-law's house, which was built long, long back, very big house, which is into ruins now. We cannot repair it because it is very, very expensive to repair it. And we have all shifted to our new job places and all. So this is a story of everyone, I think. Yeah, Dhanyavad. I hope you liked it. Beautiful, Kini ma'am. So all of us carry lovely memories of our childhood homes, our ancestral homes, and Yes. that comedian or the stand-up comedian Ayo Shraddha. So she Yes. tells her daughter in one of the things, "What you keep taking selfie, but look at our photos. It's got memories and memories Yes, of yes, people. yes. What can you all tell?" Okay, so thank you for this lovely article written by Javed ji, but so well read with emotions by you. Thank you. Welcoming Thank you our so much. last participant to the program, Saluja ji. Again, it's a surprise topic, I think. So, Saluja ji, Yes. please. Good Thank you. evening. Good evening. Today my topic is Baisakhi, harvesting inner wisdom. So, last month we celebrated. I'm audible. Yes, sir. Continue. Last month we celebrated Baisakhi. Baisakhi is festival deeply woven into cultural and spiritual fabric in northern states of Punjab and Haryana. It is time for farmers to rejoice as they witness fruits of their year-long hard work. Golden fields of fully matured wheat ready for harvest. However, Vaisakhi is more than just a harvest festival. It holds profound significance in Sikh history, as it was on this day that the revered 10th Guru, Guru Gobind Singh Ji, gathered thousands in Anandpur Sahib. He made a remarkable call, asking for those who were ready to offer themselves with unwavering devotion and surrender. 5 brave men from the assembly stepped forward, proving their absolute faith and courage. These 5 came to be known as Panch Pyare, beloved ones, and were initiated into a new order, Khalsa. Guru Gobind Singh instilled in them a vision of valor, purity, and righteousness, making them fearless warriors committed to protecting the weak and standing against oppressions. His powerful proclamation. Formation of Khalsa was not just a transformation of faith, but an invitation for every individual to rise above fear and injustice, to embody truth and resilience. Vaisakhi, therefore, is not only a festival of harvest, but a reminder of the strength that lies within each of us. It calls upon individuals to look inward, remove impurities such as doubt, fears, and ignorance, and to embrace knowledge, meditation, and wisdom. It is a day to reflect on our actions, nurture courage, and uphold values of righteousness and justice. Just as crops ripen and are ready for harvest in the month of Baisakh, similarly, a seeker's spiritual practice mature, leading to union with the divine. Sages have often said that one's own actions separate them from the Lord. And Vaisakhi serves as a reminder that this is the time for reunion.
The month of Vesak symbolizes not just change of seasons, but also self-fulfillment, self-discipline, and spiritual fulfillment. As we celebrate Vaisakhi, let it be a moment of gratitude, strength, and renewal. May this festival inspire us to cultivate self-respect, to be protectors rather than oppressors, and to transform our lives with wisdom of our gurus. A true warrior is not the one who seeks battle, but one who upholds truth with unwavering courage. Let Vaisakhi remind us to stand firm in our conviction and support those in need, and to lead with wisdom and compassion. Let us celebrate not just harvest of fields, but also harvest of wisdom within. Thank you. Thank you, Saluja sir. Sorry, you had sent the topic. I missed to write it down. So not only हमें harvesting festival हम सोचते, but उसके पीछे we are also talking of the inner wisdom. So beautifully brought out and explained by Saluja sir. Thank you so much. So we come to the end of this evening's beautiful program. Thank you to Sengupta sir, Samata ma'am, and all of you who are here. So we started from the Southeast Asia, Japan. We talked about the boon and bane of war. We talked about behavior. We talked about, our homes, the empathy. So we got today a bouquet of topics, a treasure of knowledge, and years of experience and memory. A beautiful evening to take away. And thank you so much to each and everyone here. कल्पना जी, आपका एंकरिंग सुपर परफेक्ट, सुपर। आपने जो विश्लेषण किया लोगों को सुन करके, तो वो काबिले तारीफ है। डिफिकल्ट है सब आपके आशीर्वाद, आप लोगों का हमेशा ब्लेसिंग्स एंड आशीर्वाद हमारे साथ रहना है। थैंक यू सो मच। नाइस गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू।